नमस्कार, सुप्रभात, नव वर्ष, नव मास, नव दिवस, नवारंभ। आप सभी दर्शकों के लिए यह वर्ष अत्यंत मंगलमय, उन्नति और स्वास्थ्य से भरा हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। इसरो के इस वर्ष के प्रथम प्रमोशन मिशन, जिसका नाम है PSLV-C58 XPoSAT मिशन, नववर्ष के साथ इसरो भी अपने नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए फिर से सुसज्ज है। अपने उद्देश्यों को पूरा कर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक छाप छोड़ने के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है। पिछले वर्ष हमने 7 सफल प्रमोशन देखे। इनमें गगनयान 3 का प्रमोशन, चंद्रमा की सतह पर अवतरण और आदित्य L1 उल्लेखनीय हैं। इसमें महत्वपूर्ण गगनयान संबंधी प्रयोगात्मक प्रमोशन भी किए गए थे। बीते वर्ष की सफलताओं से और ऊर्जावान होकर इसरो इस वर्ष तैयार है अपने प्रथम प्रमोशन मिशन के लिए, जो कि भारत का पहला एक्सरे ध्रुवणमापी मिशन होगा। आज 1 जनवरी 2024 को PSLV-C58 द्वारा XPoSAT उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 9:10 पर प्रमोचित किया जाएगा। Namaste viewers and a hearty welcome to the live telecast of the maiden launch of ISRO in the year 2024. I am Madhuri giving the commentary in English, and with me in the commentary box is Mr. Vikas Swarnakar giving the commentary in Hindi. I wish you all a very happy and prosperous new year. The launch of PSLV-C58 XPoSAT mission will take place today, the 1st of January 2024 at 9:10 Indian Standard Time from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the spaceport of India. The telecast is brought to you live from the Mission Control Center, courtesy Doordarshan. Apart from this, you can also watch it on ISRO website, YouTube, Facebook and X. The PSLV-C58 will fly eastward and intends to place X-ray polarimetric satellite XPoSAT weighing 469 kilograms in an elliptical orbit with an apogee of 7,028.3 kilometers and 6 degrees inclination. XPoSAT will carry out studies related to X-rays emanating from cosmic sources. After injection of XPoSAT in its intended orbit, the PS4 stage will burn twice to change its orbit for placing the PSLV. The universe is eternally captivating to humankind. The emissions from celestial objects such as black holes, neutron stars, and other energetic events arise from intricate physical processes and provide a formidable challenge to understand. In order to surmount this challenge, ISRO is gearing up to launch India's first dedicated polarimetry and spectroscopy satellite, XPoSAT. It aims to carry out research in space-based polarization measurements of X-ray emission from celestial sources. The XPoSAT satellite will be carried by a 4-stage DL variant of the PSLV-C58 rocket from the first launch pad of the spaceport of India, Satish Dhawan Space Center, SDSC, Shar, Sriharikota. XPoSAT will be positioned in a circular low Earth orbit with an altitude of 650 kilometers and 6-degree inclination. The XPoSAT satellite has been configured in a modified IMS-2 bus. XPoSAT has been ingeniously engineered to accommodate a duo of payloads, namely Helix and Expect. Helix is realized by the Raman Research Institute, Bengaluru.
It will measure the polarization of X-rays in the energy band of 8 to 30 kilo electron volt emanating from about 50 potential cosmic sources. URSC ISRO realized expect. It will carry out long-term spectral and temporal studies of cosmic X-ray sources in the energy band 0.8 to 15 kilo electron volt. XPoSAT, through its X-ray polarization measurements and analysis of long-term spectro-temporal variability, aims to provide essential insights into the nature of high-energy cosmic sources in astronomy. The lifespan of the XPoSAT satellite is expected to be 5 years. Subsequent to the injection of the XPoSAT satellite, the terminal stage of the launch vehicle PS4 will be restarted twice in order to reduce the orbit to a 350-kilometer circular orbit. The PSLV Orbital Experimental Module 3 will conduct the scientific experiments on 10 payloads from ISRO and various private space agencies. With this launch, ISRO will be able to broaden its scope in the field of astronomy and play a crucial role in developing competence in X-ray polarimetry and spectroscopy in India, which will lay the foundation for future enhancements and foster collaboration within the astronomy community. में PSLV-C58 प्रमोचक यान द्वारा वैज्ञानिक निर्धार को पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाले चक्राकार कक्षा में 6 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। XPoSAT उपग्रह को लगभग 1316 सेकंड्स में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इस मिशन में चतुर्थ चरण को कक्षीय प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे हम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, पोयम। प्रमोशन की उल्टी गिनती 25 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और अभी हम प्रमोशन से 21 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान को और तथा स्पेसक्राफ्ट को पावर ऑन कर स्वास्थ्य जांच जारी है। It's standing majestically at the first launch pad. On your screens, Secretary DOS and Chairman. PS4 activation completed. अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है एक संक्षिप्त PSLV-C58 का इंटीग्रेशन वीडियो। T-12 minutes. Now we bring to you an integration video of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. You can see on your screens the beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. In the PSLV integration facilities, the stage 1 motor is being assembled segment by segment. The S139 motor consists of 5 segments, a nozzle end segment, 3 middle segments and 1 head end segment. Two middle segments had been assembled, and this is the head end segment, and here's the igniter. C58, being a DL version, has 2 strap-on motors, which are PSOM XL motors carrying 12.2 tons of solid propellant each. This is being brought to the PSLV integration facilities where it is tilted and integrated with the core motor. These are the 2 strap-ons.
The SITVC tanks being integrated now. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control for the control of stage 1, and this is RCT, Reaction Control Thruster related systems. Here you can see the interstage being carefully hoisted with the help of facility electrically operated overhead crane and being integrated to the core motor. And the second stage, PS2, which is a liquid stage, is prepared in a separate assembly building being tilted. Vikas engine powers second stage of PSLV. It is being integrated with the core motor and 2 stages are ready. Here the PSLV is being transported in its semi-integrated condition from the PSLV launch integration facilities to the mobile service tower. आपने देखा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का समायोजन पूर्ण कर यह तृतीय चरण को तथा चतुर्थ चरण को एक साथ समायोजित किया जा रहा है। इस समायोजन को MST मोबाइल सर्विस टावर पर लाया जाता है। सभी कार्य पूर्ण कुशलता तथा दक्षता के साथ संपन्न किए जाते हैं। यह है हमारा PSLV-C58 का उपग्रह XPoSAT। इसमें 2 मुख्य निदभार हैं जिसका नाम है XSPECT और POLIX। पूर्ण परीक्षित कर XPoSAT को भी पेलोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया। इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है। यह ऊष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV-C58 रॉकेट। यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है। वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर। अब हम उड़ान से 4 मिनट 22 सेकंड की दूरी पर। आइए अब आपको इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त में परिचय देते हैं। सर्वप्रथम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स T-3 सेकंड्स पर प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद T0 पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा और इसके 400 मिलीसेकंड के पश्चात सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को प्रज्वलित किए जाएंगे। इस समय यान का उत्थापन होगा। लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर स्ट्रैप-ऑन के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। कोर बूस्टर S139 बूस्टर प्रज्वलित रहकर कुछ 110 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 57 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति। प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण को प्रज्वलित किया जाएगा और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण 152 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा और इसी दौरान ऊष्मा कवच को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। PS2 द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे पृथक कर दिया जाएगा और इसके पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण जो कि उच्च निष्पादन वाला HPS3 चरण है, ठोस नोदक पर आधारित चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय
यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सेकंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। T-2 minutes. कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो XPoSAT उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित करेगा। We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV-C58 XPoSAT mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. Seconds. All subs sound. The stage Minus 50 2 seconds. ignites All sequences after sound. PS1, continues to burn for 152 45 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. VHPP open. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will Minus be 30 achieved. seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोचन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। This is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal.
And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई Plus 5 वर्तमान minutes. में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात Vehicle ही in combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. जी हाँ, यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात
तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place. इस उपग्रह का कुल भार 469 kg है। इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निर्भर अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV-C58 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV-C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। Happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to Mission Director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा XPoSAT और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected XPoSAT primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately, the T0 will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम